So most of our focus is going to be on problem solving. Theory part is almost over. You have close to 30 plus questions today in this class sheet. Start. 2 minutes, 2 questions. Give it a shot. Two question, 2 minutes you have, 2 questions you have. Good thing is the number is by default given to you as factorized. It's already factorized, a huge number. 2 to the power 6, 3 to the power 4, 5 to the power 3. Very good. How many factors are there for this number? How do we count factors? We look at the power of prime and we increase it by 1. Look at the power of prime, increase it by 1. Look at the power of prime, increase it by 1. So there are 140 factors for this. Absolutely. Now, second question is a little different. We want only odd factors. See, a number becomes even when there is a power of 2. If there is no power of 2, the number by default becomes odd. See, the number currently we have is 2 to the power 6 into 3 to the power 4 into 5 to the power 3. What am I looking for? Odd factors. For factor to be odd, there must be no availability of 2. There can be no 2. You count the factors for these. The number of factors will be 5 into 4, 20. This number will have 20 odd factors. See, we have talked about this. We count factors through their powers. I do not want any odd factor. Let me take a small number to explain this to you. Let us talk about 36. Or I can take an even value also, but 36 is fine. It is 1 into 36. It is 2 into 18. It is 3 into 12. It is 4 into 9. It is 6 into 6. So what are the odd factors? This is an odd factor, odd factor, odd factor. This has got 3 odd factors. What is the number? The number is 2 square into 3 square. Because I'm looking for only odd factors, I cannot count any power of 2. Odd factors will come from here. So what is the power? The power is 2. How do we count factors? 2 plus 1. You see there are 3 odd factors. Agar multiple bhi hota, let us say I had a number 90. I had a number 90. What is 90? 90 is 2 into 3 square into 5. I am looking for odd factors. For odd factors, all you have to do is cancel 2 and count factors. Iska power plus 1. Power plus 1. There are 6 odd factors. अब मैं आपको दिखाता हूँ what are those 6 odd factors. This is 9 into 5, 45. 1 is a factor, 45 is a factor. 3 is a factor, 15 is a factor. 5 is a factor, 9 is a factor.
ये आपके 6 ऑड फैक्टर्स हैं. These are your 6 odd factors. देखो कंफर्म करो. Every one of these numbers can divide 90. So you want odd factors, cancel all 2's. Cancel all 2's, you will have odd factors. So small example, 3 minutes worth of theory. Copy this down. Highlight this. You saw something new even after knowing all the theory. Making a mistake even after knowing everything. Comment down once you have taken care of this. Try this.
I hope you guys have revised notes, concepts that we covered in the last lecture. See, when do we call a number even? A number is called even if it is a multiple of 2. Either कुछ भी हो. If you have a multiple of 2, the number is even. So I am looking for multiples of 2. You remember that approach? You want a multiple of any number, you keep it outside. आपको 2 का multiple चाहिए, keep it outside. So what happens inside? 2 to the power 5, 3 to the power 4, 5 to the power 3. I am looking for a multiple of 2. So 2 should be outside. Now what do? We work with powers. 6, 5 and 4. 6 into 5, 30, 30 into 4, 120. There are 120 even factors. चलो ये देखो, the number has 140 factors total. 140 factors total. 20 of the factors are odd. There are 20 odd factors. तो इनको minus कर दोगे. There should be 120 even factors. Because a factor is even or odd. Even if it is a prime number, it is either even or odd. So you see, if you cancel the odd factors, अगर आपने odd cancel कर दिया, तो बच गया even. So from the last 2 questions, you could have answered the third one. From the last 2, one way to think. What is that approach? Total factors minus odd factors is equal to even factors. Another way is a even factor is a multiple of 2. तो 2 को outside रखो. जिसका multiple चाहिए keep it outside और बाद में factor गिन लो. What does question number 4 say? What are the prime factors of the number? भाई ये number prime है. तो 2 is one prime factor. 3 is another prime factor. 5 is another prime factor. दिख तो रहा है. How many prime factors are there? There are 3 prime factors. A prime number that divides, वो दिख तो रहा है यहाँ पे. 2 is a prime number, 3 is a prime number, 5 is a prime number. So third question, the answer is 120. Please observe. And fourth question, the answer is 3. There are 3 prime factors. Take your time, learn these things, observe these things, then comment done. See, I have asked you in first question total factor, second question even factors, third question prime factors. Now I will ask you for composite factors, non-composite factors. So you need to understand the distinction between these. How many total non-prime factors are there? Total factors which are multiples of 6. So take 2 minutes, try this.
what are the total non-prime factors? So in the previous question, we saw there are three prime factors. Three prime factors. Total factors are 140. So how many non-primes are there? Non-prime factors 140 minus 3 137. क्या rocket science है बताओ इसमें? Question 5 we have just solved. The question was how many non-prime factors are there? Prime factors are 3. Total में से minus कर दो. Non-prime factors we got. Sixth one, we have solved many questions like this. Now the number itself is this. We want a multiple of 6. What is a multiple of 6? 2 into 3. तो यहां से एक 2 को बाहर निकालो, एक 3 को बाहर निकालो. It is a multiple of 6. ये तो नहीं बोला it is not a multiple of 5. तो 5 रहेगा. Lot of people what they do is, क्योंकि सर 6 का मल्टीपल मांगा है, what is 5 doing there? अरे 5 into 6 30 भी तो होता है. So this is the 6 outside. Now what do? You count factors for this. ये 1 से बढ़ जाएगा 6. This will increase by 1, 4. This will increase by 1, 4. 4 into 4, 16 into 6, 96 factors are multiples of 6. जिसका भी multiple चाहिए, keep it outside and count factors for the remaining. Try this. It is same question. Sixth question repeated with different language, with different multiple.
Very good. So seventh one says, how many factors of this will end with a 0? So to end with a 0, it must be a multiple of 10. What is 10 itself? 10 is 2 into 5. So take out a 2, take out a 5. So now we have 2 to the power 5, 3 to the power 4, 5 to the power 2. 10 is outside. Every multiple of 10 will have a 0 in the end. Now count factors. Increase the power, increase the power, increase the power. What is that? 30 into 3, 90 factors. So answer to seventh question is 90 factors. 8th, total factors that are multiples of 30. देखो, 10 is 2 into 5. What is 30? 30 is 2 into 3 into 5. So एक 2, एक 3 और एक 5 बाहर चाहिए. From n, 2, 3 and 5 is needed outside. 30 is needed outside. So now here it becomes 2 to the power 5, 3 to the power 3 and 5 to the power 2. बढ़ाओ इसको plus 1 and plus 1. 6 into 4, 24 into 3, 72. There are 72 factors which are themselves multiples of 30. There are 72 factors which are themselves multiples of 30. Find the total number of factors that are squares, total number of factors that are cubes. So the last 3-4 questions seem to be in your comfort zone because exact theory has been covered with examples. Multiples of 6, multiples of 10, multiples of 30, counting squares, counting cubes. So you have methods ready for these. Go on, try. Comment answer.
Very good. That answer is for ninth question. Yes. How do we count squares? We count squares provided by individual primes. How many squares does this provide me? 2 to the power 0 is a square. 2 to the power 2 is a square. 2 to the power 4 is a square. 2 to the power 6 is a square. 3 to the power 4. You don't have to write this in the exam. You can simply verbally count these things. 3 to the power 0 is a square. 3 to the power 2 is a square. 3 to the power 4 is a square. 5 to the power 0 and 5 to the power 2. These are the squares they provide. Individually, this one provides 4 squares, this one provides 3 squares, and this one provides 2 squares. So how many squares are provided? 24. Do you remember this being covered in the theory? When you multiply individual squares, you will always end up with a new square. Do you remember this? When you multiply individual squares, the outcome is also a square. So ninth question, the answer would be 24. For 10th question, I am counting cubes. So 2 to the power 0 is 1. 1 is a cube. 2 to the power 3, 2 to the power 6. These are all cubes. 3 to the power 0, 3 to the power 3. These are cubes. 5 to the power 0 and 5 to the power 3. These are cubes. So how many cubes are they providing us? 3 cubes, 2 cubes, and 2 cubes. So how many cubes will we have? 12 cubes will have. 10th one, the answer is 12. Ninth one, the answer is 24. How do we count square factors and how do we count cube factors? Is this clear? Confirm? Find the total number of factors that are squares and also multiple of 6. Find total number of factors which are even cubes.
Total number of factors which are even cubes. Total number of factors which are squares and also multiples of 6. Take 2 minutes, think over this. I will solve it for you. Think over this. How should I generate a square which is also a multiple of 6? Now understand, if you have the number n as 2 to the power 6, 3 to the power 4, and 5 to the power 3, and you want factors which are multiples of 6. A multiple of 6 will have what outcome? Will have 2 into 3 written outside. Now I don't want it to be a multiple of 6. I want it to be a multiple of 6 and also a square. What is unique thing about squares? Let us say you take 16. 16 is 2 to the power 4 or 4 to the power 2. You take a larger number, let us say 144 you take. It is 2 to the power 4 into 3 to the power 2. You take 225, which is a square of 15. It is 3 square, 5 square. A square is created with even powers. A square is created with even powers. Or the power can be 0. Anything to the power 0 is also a square. So when you want a multiple of 6, you don't want 2 into 3. Because it is a square, you also want it to be 2 square, 3 square ka multiple. Now what remains inside? 2 to the power 4, 3 to the power 2, 5 to the power 2. This is already a square. This is already a square. I need to make these into square factors. So how many squares will this provide? 2 to the power 0, 2 to the power 2, 2 to the power 4. It will provide 3 squares. How many squares will this provide? 3 to the power 0, 3 to the power 2. That is 2 squares. How many squares will this provide? 5 to the power 0, 5 to the power 2, 2 squares. So how many squares will you have? These 12 squares are also multiples of 6. There are 12 factors which are squares and also multiples of 6. This is question number 11th. So apply common sense. A square will have a power which is multiple of 2. So what will a cube have?
A cube will have a power which is a multiple of 3. See, when you say 27 is a cube, it is 3 cube. Some other number, let us say you tell me 729 is a cube, it is a 9 cube or 3 to the power 9. So when a number is a cube, the power must be multiple of 3. Or when the power is 0, that is also a cube. ये ध्यान दो आप. What I want in question 12th is the number must be what? Even cube. Even cube. तो मेरे को 2 का cube common लगेगा. I will need a 2 cube outside these brackets. 2 cube बाहर होना चाहिए. तो what is inside? 2 to the power 3, 3 to the power 4, 5 to the power 3. Now this is already a cube. I need to convert these into cubes. So what powers does 2 provide? Power 0 and power 3. What cubes does 3 provide? Power 0 and power 3. What cubes does 5 provide? Power 0 and power 3, which is 2, 2, 2, which is 8 cubes. Take your time, observe. These are 12 squares which are of the form 6n, multiples of 6. Copy this. Confirm done. Try. Find the sum of factors which are multiples of 2, multiples of 4. Find sum of factors which are multiples of 4.
Are you guys able to hear and see the meet? Now, if you remember, this also we have covered in theory. When you want sum of factors which are multiples of a given value, first you need to write that number common. N is equal to 2 square into 2 to the power 4, 3 to the power 4, 5 to the power 3. Now it is already a multiple of 4 outside. Now what I want sum of factors. Remaining for the remaining part, find sum of factors. How do we find sum of factors? We increase the power by 1. मैं ये 4 को नीचे लिखता हूँ. 2 to the power 5 minus 1 upon 2 minus 1. This 2 to the 3 to the power 5 minus 1 upon 3 minus 1. 5 to the power 4 minus 1 upon 5 minus 1. These are very large numbers. I'll suggest you be careful. So the sum will look like 4 into what is 2 to the power 5? 32 minus 1. 2 to the power 5, 32 minus 1, 31. 31 upon 1, 31. 3 to the power 5 is 243. 243 minus 1 is 242 upon 3 minus 1, 2. What is 5 to the power 4? 625 minus 1, 624 upon 5 minus 1, 4. Cancelled, cancelled, cancelled. 121. So 31, 31 into 121 into 624 is the answer. So hopefully such a large calculation would not be asked. Let us hope that, let us presume that if it is asked, the final answer you will have to type in. This is the final answer. What does question number 16 say? Sum of factors which are squares, that are squares. So you remember this also you have done. Again, we are not going to calculate the whole thing. It's going to be fairly large. इससे छोटा होगा, but it's still a large number. Squares. So I will go for squares. 2 to the power 6, 2 to the power 4, 2 to the power 2, 2 to the power 0. These are the squares given by 2. What are the squares given by 3? 3 to the power 4, 3 to the power 2, 3 to the power 0. Squares provided by 5. 5 square, 5 square, 5 to the power 0. This is your answer. You want me to complete this? Let me go ahead and do this for you. This is 64. 64 plus 16, that is 76. 64 plus 16, that is 80. This is 84 plus 1. This is 85. This is 81. 3 to the power 4, 81 plus 9, 90. 90 plus 1, 91. This is 25 plus 1, 26. This is your answer. This is the answer for sum of all factors which are either multiples of 4 or themselves squares.
Everyone confirm this is clear? Yeah. Dekho, we are looking for individual squares and we are looking for the additions. So in theory, if you remember last lecture we have seen, what are the squares provided by 2? The highest power is 6. I'm looking for power which is multiple of 2. 2 to the power 6, 2 to the power 4, 2 to the power 2, 2 to the power 0. I'd shown you how does that formula work. That formula prime to the power x plus 1 minus 1 upon a minus 1. It is a sum of GP. See, this is a GP. What are you multiplying? 2 square, 2 square, 2 square. तो GP से ही add करते हैं. Sum of factors. This is a GP. This is a GP, geometric progression. तो ये GP add कर रहे हो आप. The only difference is here the jump is of 2 in the power. These are squares. These are square. These are squares. बस calculate कर लिया. What is this? This is 64 plus 16 plus 4 plus 1, which is 85. What is this? This is 81 plus 9 plus 1, which is 91. What is this? This is 25 plus 1, 26. Done. Sum of factors which are squares. Moving on from this, moving away from this. Try. अभी खाली लिखना सीख लो. 17, 18 you don't have to actually calculate. Sum of all factors and product of all factors. What is general form for this? Product of all factors is equal to n to the power number of factors by 2. That's your answer. Done. Number of factors तुमने पहले part में calculate कर लिया in the very first question. Number of factors is 140. So what will this be? N to the power 70 is product of all factors. Question 18. Sum of all factors मत calculate करना, just लिख दो. Question 17, sum of all factors. यहाँ पे power will become 7 minus 1 minus 1. What will this become? 3 to the power 5 minus 1 upon 3 minus 1. This will become 5 to the power 4 minus 1 upon 5 minus 1. जैसा कि in the previous question you guys had a doubt, ये किधर से आया? How does this work? So if you recall, ये क्या क्या factors देगा? 2 to the power 6, 2 to the power 5, 2 to the power 4. ये कहाँ तक जाएगा? 2 to the power 1, 2 to the power 0. What factors will this provide? This will provide factor 3 to the power 4, 3 to the power 3, 3 to the power 2, 3 to the power 1, 3 to the power 0. ये कौन से factors देगा? बेटा यही तो geometric progression. What is sum of a GP?
of a GP, first value multiplied by common ratio to the power n minus 1 upon r minus 1. क्योंकि 5 का पावर 0 is 1. What is n number of terms? कितने टर्म्स हैं आपके पास यहाँ पे? 4 टर्म्स. देखो ऊपर 4 आ रहा है ना, तो वट एवर पावर इज देयर उससे एक फैक्टर ज्यादा होता है, पावर 4. सिमिलरली देखो इसका कॉमन रेशो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है हर बार, कॉमन रेशो इज 3. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 5. देखो यहां पर आ गया 3 to the power 5 r to the power n. तो ये डेरिवेशन के साथ में आपने सीख लिया. दिस इज द डेरिवेशन पार्ट, दिस इज द फाइनल एप्लीकेशन पार्ट. सम ऑफ फैक्टर्स जो होता है इट इज डन थ्रू देयर पावर्स, उनके पावर से ही कैलकुलेट होता है. कंफर्म इफ दिस इज क्लियर टू यू. कैलकुलेट नहीं करना, जस्ट रिप्रेजेंट. इतना कौन मिलियंस में कैलकुलेट करेगा. चलो समथिंग डिफरेंट. ये भी आपने इन फॉर्म ऑफ थ्योरी किया है, यू हैव डन ऑल ऑफ दिस. सो आई विल गिव यू फ्यू मिनट्स, take 2 to 3 minutes per question. Try.
There's a small trap laid in the question. The number on the screen is not completely factorized. आप इसके फैक्टर गिनना शुरू कर दोगे, सब कचरा हो जाएगा. The number is not fully factorized. पहले factorize करो नंबर को. 2 cube. What is 6? 2 into 3. तो ये जो cube है, it will be available on both. 5 to the power 4. This is okay. Now what is 108? 108, you have to factorize this. It is 4 into 27, which is 2 square into 3 cube. 108 is 2 square into 3 cube. So 2 square into 3 cube. So the proper factorized form is the power of 2 will be added. 3 plus 3, 6 plus 2, 8. Power of 3 will also be added. 3 plus 3, 6, 5 to the power 4. This is the complete factorized form. Make sure there are no mistakes in it. This is 2 into 3, equal power distributed. This is 2 square into 3 cube, taken care of. Now what does first question say? In how many ways can n be written as product of two natural numbers? Does the question give us names of those numbers? No. So here you notice the power is 8, 6 and 4. Powers are even. So the number is a perfect square. How many factors does it have? Factors, increase it by 1, 9, increase it by 1, 7, increase it by 1, 5. 9 into 7, 63, 63 into 5, 315 factors are there. थोड़ा अच्छे समझना, there are 315 factors. There will be a factor in the middle because it's a perfect square. बीच में एक factor होगा, 1 minus हो गया, बच गया 317. 317. What is half of that? 314. 314. What is half of that? There are 157 factors here. There are 157 factors here on the right side. अब क्योंकि आपको नाम नहीं दिया है तो you only need a pair. How many pairs are there? There are already 157 pairs. ये जो नंबर है ये खुद से तो पेयर बना सकता है ना. So plus 1. So how many ways it can be done? 158 ways. Take your time, slow down. These are very conceptual questions. आपको भले ही फॉर्मूला आता होगा फैक्टर गिनने का. यहाँ पर remember when no name is given, जैसे आपको लिखना हो 12, आप 2 into 6 लिखो चाहे 6 into 2, it is the same because name has not been given. So question number 1 में first your job is to find factors. There are 315 factors. It is an odd value. Do you remember? Squares can have odd factors. Squares have odd factors. So it has 315 factors. तो मैंने बीच का फैक्टर हटा दिया तो बच गए 157 फैक्टर्स. तो पेयर्स बन गए 157 पेयर्स. बट बीच वाला खुद से तो पेयर बनाएगा ना, तो 158 पेयर्स. भाई जैसे 144 भी होता, 144 भी तो 12 into 12 होता है ना, ये भी तो एक पेयर है. अब सेकंड में क्या वर्डिंग यूज कर लिया? प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स. टू डिफरेंट नेचुरल नंबर्स चाहिए अपने को, तो ये वाला पेयर आप नहीं काउंट करोगे जो सेम नंबर का है. तो व्हाट विल बी द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2? It will be 157 pairs. Take your time. Should I repeat any of these? Let me know. Observe, we are going beyond the question. पुराना theory भी revise कर रहे हैं. It is expected.
Once you understand this, confirm. Try this. In how many ways can n be written as product of a, b, where a, b are natural numbers? A, B are unequal natural numbers. छोटे छोटे distinctions हैं. A very small change has been made in the way question is framed. Notice it is the same number. So one thing good we have done is we have factorized it completely. 2 to the power 8, 3 to the power 6, and 5 to the power 4. Completely factorized. In third question, you see, if I take 12, if I say a into b is equal to 12, it will matter whether a is 1, b is 12, or a is 12, b is 1. What are these called? Ordered pairs. So see, this is one pair. So दो possibility आ रहे हैं. There are two possibilities. For every pair, there are two possibilities. So here when you say this number has 315 factors. It's a square. तो बीच में एक factor होगा. Left hand side there are 157 values. Right hand side there are 157 values. ध्यान से, if a is a number from here, तो b by default fix हो जाता है ना. Do you see? इसके factor है 1, 12, 2, 6, 3, 4. अगर आपने a को fix किया 2, तो by default b fix हो गया ना. So a has how many options? 157 options. अगर a को यहां से आपने select किया, a has how many options? 157 options. So how many options does a have? A will carry on with 1, 3, 4 options. अगर a का वैल्यू ये हुआ क्योंकि इसी का स्क्वायर है, तो b का वैल्यू भी यही हो जाएगा ना, +1. So do you remember in such questions when you are writing a into b is equal to n और कोई कंडीशन नहीं है, number of factors is equal to number of ways. ये एग्जाम्पल आप डेरिवेशन भी देखा है. आई एम बीइंग एज थॉरो एज पॉसिबल हियर. ये किसी नंबर का स्क्वायर है, ये जिस भी नंबर का स्क्वायर है. इफ आई डोंट कंसिडर दैट, बाकी बच्चे को मैंने हाफ कर दिया. 314 का हाफ इज 157 ऑन द लेफ्ट साइड एंड हाफ इज 157 ऑन द राइट साइड. ए के फिक्स होने से बी फिक्स हो जाता है.
So how many possibilities are there for A? 157 and 157. तो 314 possibilities are there for A. अगर A और B बराबर हो सकता है तो बीच वाला भी वैल्यू है. Now what does question number 4 say? How does question number 4 differ here? How is it different than others? In this case, we cannot have the same value for A and B. So 314 ways. You want A into B is equal to N, but you don't want A is equal to B. If A cannot be equal to B, if A cannot be equal to B, तो बीच वाला जो रूट है वो काउंट नहीं होगा for A. बढ़ते हैं आगे इनसे. Comment done, guys. So basically in last 1 hour, we have revised everything that we have learned in terms of formulas and methods. Try this. Two to 3 minutes per question you have.
So what has been asked? You are not looking for just a multiple or way to write n as multiple of two numbers. You're looking for them to be even numbers. Now see, listen to this. I'm focusing on question 5 at this stage. This number n, a very large number, I want it to be written as product of two even numbers. See, if this is a number, I have not given it a name. इसका कोई नाम नहीं है. I want it to be even. A even number is always a multiple of 2. I want second number to be a multiple of 2 as well. आपको दोनों नंबर मल्टीपल ऑफ 2 चाहिए. कैन आई से दोनों अगर मल्टीपल ऑफ 2 है, आई कैन टेक 4 कॉमन और बाद में आई कैन क्रिएट फैक्टर्स. देखो, इफ देयर इज 12, आई वांट टू राइट 12 एज मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स. तो ये तरीके हैं 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4. और कोई तरीका है क्या? नहीं. आई वॉन्ट बोथ फैक्टर्स टू बी इवन. तो एक ही तरीका है ना. देखो, ये एक ही तरीका है. इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2, ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2. तो डू यू सी, मैं 2 और 2 कॉमन ले सकता हूं ना. ये समझा आपको? सो व्हाट यू नीड टू डू इज, बिकॉज यू लुकिंग फॉर टू मल्टीपल्स ऑफ 2 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, यहां से 4 कॉमन ले लो. अब जो बच गया, वॉट एवर इज रिमेनिंग फॉर यू, now imagine you are writing these numbers in two parts. You are breaking these numbers in two parts. कैसे कर सकते हैं? फैक्टर गिन के. डू यू रिमेंबर फैक्टर गिनना होता है? डू यू रिमेंबर दिस? whenever you have to write it as product of two factors. नाम नहीं गिवन है, names have not been given to you. देखो, इसके फैक्टर कितने होंगे? 7, 7 and 5, which is 49 into 5, which is 245 factors are there. अब ये odd आ गया. If this is odd तो कैसे करते हैं? बीच वाले को निकाल दो, बच गया 244. 244 means there are 122 factors here. There are 122 factors here. ये भी तो खुद से पेयर बनाएगा ना. डिस्टिंक्ट थोड़ी बोला. The question does not say distinct factors. It simply says two even factors. तो 122 पेयर्स हैं प्लस ये खुद से पेयर बनाएगा. 122 plus 1. There are 123 pairs where they are both even. Question number 6. So n is written as product of two odd numbers. Is n a odd number? n क्या odd number है? नहीं. आप देखो, अगर 12 होता तो देखो, one can be even, other can be odd. One can be odd, other can be even, क्योंकि नंबर खुद even है. Is it possible to write a even value as multiplication of two odd numbers? Is it doable? No, it is not happening. ऐसा possible ही नहीं है. The number itself is a multiple of 2, तो 2 कहीं तो जाएगा. It might be possible कि मैं सारे odd number एक जगह ले आऊं. I can bring all odd numbers in one place. I can bring all even numbers in other place. मैं सारे के सारे 2 यहां रख दूंगा. बाद में 3 आएगा तो भी even रहेगा ना. 2 to 3 to the power 8. ऐसा हो सकता है. This is possible. But two odd numbers is not possible. So how many ways? 0 ways. Is it possible to write this large number as multiple of two odd numbers? No, it is not. थोड़ा 5 पे एक बार ध्यान दो. 6 तो conceptual है. 6 is conceptual, you can answer it verbally. Are you able to understand the fifth problem? Complete करो, comment, done.
फॉर बोथ। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन 5 में पूछा 2 इवन फैक्टर्स, 6 में पूछा 2 ऑड फैक्टर्स, 7 में प्रोबेबली मैं आपसे पूछूंगा 1 इवन 1 ऑड फैक्टर। चलो देखो, एज प्रेडिक्टेड, in how many ways can you write n as product of one even and one odd number? In how many ways can n be written as product of a and b where one is even and one is odd? क्या फर्क है 7 और 8 में? 7 और 8 में ये फर्क है कि यहाँ पे नाम आ गया। जब नाम आ जाता है ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाते हैं। टेक 2 minutes, ट्राई।
clearly in this particular case, what is the number 2 to the power 8, 3 to the power 6, 5 to the power 4. This is the number that we have. This is the number that we have in first place. If I want it to be even multiplied by odd, देखो, if it is 12, 12 बड़ा छोटा हो जाएगा. Let us take it as 60. 60 is 2 square into 3 into 5. आपने 2 square को एक ही जगह रखो, बाकी इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो. देखो, if this is 4 into 15 मेरे को चलेगा. If it is 4 into 3 into 5 मेरे को चलेगा. If it is 4 into 5 into 3 मेरे को चलेगा. The idea is 2 का सारा पावर should be in one place. अगर 2 का पावर बटा तो दो इवन हो जाएंगे. Here what is the power of 2? 8. So whichever factor is even will hold all the powers of 2. सारे पावर उसमें होंगे. अगर इनमें से कोई फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो जाए मेरे को चलेगा, क्योंकि सारे पावर यहाँ पर हैं. अगर 3 इधर आ जाए तो भी 3 into 2 इवन है. 5 आ जाए, आई डोंट केयर. तो मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे बेसिकली इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन 2 पार्ट्स. इनके कितने फैक्टर्स हैं? दिस इज 7 एंड दिस इज 5. देयर आर 35 फैक्टर्स. अब ये खुद इवन है, ये खुद ऑड है, ये खुद ऑड है, विच इज अ स्क्वायर. तो बीच का अगर फैक्टर हटा दें, there are 17 factors and 17 factors. So how many pairs can you form from this? You can form 17 plus 1, 18 pairs. ये समझा क्या आपको? Did you understand this? When you want even factor on one side and you want odd factor on the other side, पूरे के पूरे 2 निकाल लो. वो सारे के सारे 2 किस में आ जाएंगे? even के अंडर में आ जाएंगे. All of the 2's will come under even factors. And then you work with the odd के pairs बना दो. Here what changes in question number 8 is that A even है, B odd है. A is even, B is odd. ये एक possibility हुआ. दूसरा possibility A is odd, B is even. तो ये जो आपका आंसर 18 आया है, 18, इसमें यही तो है ना कि ये A है तो ये B है, ये B है तो ये A है. तो how many possibilities? 2 possibilities. So 18 into 2, 36 base. बस इतना ही गैप था, इतना ही फर्क था. दिक्कत वाली बात कहाँ है? एफर्ट कहाँ लगेगा? इन अंडरस्टैंडिंग ये क्या किया सर आपने, व्हाट हैव यू डन हियर. अरे बेटा, ये पावर 6 और पावर 4 जो है, पावर 6 and 4 implies what? They are squares. 3 to the power 6 and 5 to the power 4. इनको ही तो दो जगह में तोड़ना है ना, बाकी तो 2 sorted है, 2 is already fixed. So answer would be 18 and 36. 36 क्यों आया? Left hand side is what? Unordered pair. A क्या है, B क्या है, does not matter. अब right side में क्या फर्क है? A and B both matter. A कितना है, B कितना है, both start to matter. हाँ, बेटा नहीं ना, सुनो, ये जो है ये एक ही जगह रखा हुआ. आप अगर इसको दो हिस्सों में ब्रेक करके कॉमन फैक्टर बना देते हो, इधर 2 का पावर 8 लगा हुआ है ना पहले से. सुनो मेरी बात, वो नंबर बीच का आपने सेम ब्रेक किया, लेकिन एक साइड इवन बनाने के लिए बैठा है ना वहां. इसमें जब वो सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा और वो सेम नंबर यहाँ पे आएगा, तो दिस एंड दिस आर नो लॉन्गर सेम, क्योंकि 2 की पावर 8 रखा है ना आपने एक जगह पे उसको डिस्टिंग करने के लिए. वो 2 की पावर 8 से मल्टीप्लाई होकर बड़ा वैल्यू बन जाएगा.
आप ये सोच रहे हो कि इसको अगर मैंने ब्रेक कर दिया ऐसा 3 की पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 एंड 3 की पावर 3 इंटू 5 का पावर 2, आपने इसको इक्वली ब्रेक कर दिया, लेकिन ये इवन बनने के लिए किससे मल्टीप्लाई होगा? अभी this and this are no longer same, they are not the same values. ऐसे छोटे छोटे चेंज करके पूरा खेल खेल जाता है कैट। नाउ व्हाट पीपल डू इज, ऐसे क्वेश्चन ना क्लास में करवाते हैं, न मॉक में, न रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं। कर्नल सैंडर्स भी ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाते और कैड में आ जाता है। देन somebody like me who has gone and appeared कैड, उसको फिर बैठ के टाइप करना पड़ता है एनालिसिस सॉल्यूशन, फिर स्टेज पे एनालिसिस सॉल्यूशन ले लेते हैं। इसलिए आपने देखा वो पूरे खानदान में एक पर्सन होता है आर्मी में, बट हर किसी गाड़ी के ऊपर लिखा होता है आर्मी, वैसा हाल है। ये हर जगह का है बेटा, ऐसा नहीं कि इट्स विथ यू ओनली, हर जगह पे यही है। चलो ट्राई दिस एक्चुअली फ्रॉम कैट, टेक 3 to 4 minutes, try, give it honest attempt.
the number of factors of square of a natural number is 105. The number of factors of the cube of the same number is f. Find the maximum possible value of f. फिर कैट वाला क्या खेल खेल गया, मैक्सिमा लगा दिया. अब सर फैक्टर्स में कैसे मैक्सिमा मिनिमा होता है? इनफैक्ट कैट 2023 में भी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन था. देयर इज अ नंबर n which is 144 to the power 145. अब n को ऐसे लिखना था as a and b की, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बताऊंगा मैं आपको, आपके मॉक्स में डालूंगा कि इसके मैक्सिमम हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल, सो दैट देयर आर मैक्सिमम फैक्टर्स एंड मिनिमम फैक्टर्स. सेम बातें हो रही हैं. अब थोड़ा सोचो, सुनो, लैंग्वेज समझो. अभी जैसे मेरे पास होता है n is equal to 12 which is 2 square into 3. अब मैं n का भी स्क्वायर करता तो पक्की बात है ना, पावर विल बिकम ऑड. अब इसके फैक्टर गिवन है, ये जो 105 फैक्टर्स हैं, they are not the factors of the number, they are the factors of the square. अब हमें तो ये भी नहीं पता कि जो नंबर है उसके खुद के कितने फैक्टर्स हैं प्राइम. तो मैं 2-3 केसेस आपको समझाने की कोशिश करता हूं. अगर नंबर n होता और इसका एक ही प्राइम होता, a उसका पावर x, या नंबर होता उसके अंदर में 2 प्राइम होते, या नंबर के अंदर में, सी आई हैव टू टीच सो आई एम बीइंग वेरी वेरी थॉरो, आपको भी पैटर्न क्लिक हो जाएगा. इनफैक्ट आपको याद है आप लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा किया हुआ है. डू यू रिमेंबर, जो प्रोडक्ट होता है वो बढ़ जाता है जब आप वैल्यूज को बराबर बराबर करते हो. तो आई हैव नो आइडिया इनमें से कौन सा फॉर्म है मेरे नंबर का. आई डू नॉट नो. लेकिन अगर इसको मैं स्क्वायर कर दूं तो इसके फैक्टर कितने बन जाएंगे? इसके फैक्टर बन जाएंगे 2x plus 1 जो कि 105 के बराबर है. थोड़ा ध्यान से देखना, 105 के बराबर है, ये इधर चला जाएगा 104, डिवाइड बाय 2 कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई? 54. अगर ये 54 है और मैं चाहता हूं n का क्यूब निकालूं, n का क्यूब क्या हो जाएगा? n का क्यूब विल बिकम 162. n का क्यूब विल बिकम दिस. तो देखो अभी इसके फैक्टर कितने होंगे? इसके फैक्टर होंगे 163. है कहीं पे 163 ऑप्शंस में? नहीं है. अगर ऐसा होता n, इफ n वाज लाइक दिस, तो n का स्क्वायर कैसा हो जाता? a to the power 2x, b to the power 2y. इसके फैक्टर कैसे होते? 2x plus 1, 2y plus 1. मैं हॉरिजॉन्टली सॉल्व कर रहा हूं, सारी चीजें हॉरिजॉन्टली सॉल्व हो रही, ध्यान दो. ये किसके बराबर है? 105 के. हाउ कैन यू ब्रेक डाउन 105? आप लिख सकते हो 5 into 21. और क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो 3 into 35. और कैसे लिख सकते हो आप? यू कैन एड इट फर्दर एज 7 into 15. अब क्या होगा, इससे अलग अलग वैल्यू आएगी, x की अलग अलग वैल्यू आएगी. देखो आपको क्योंकि मैक्सिमम करने हैं फैक्टर, आप ना 105 से शुरू करते, ज्यादा अच्छे से जल्दी बनता. आई एम एडिंग एक्स्ट्रा स्लाइड हियर, आई कैन नॉट कम बैक टू दिस, थोड़ा ध्यान देना. आप सबसे पहले तो 105 को लिख कैसे सकते हो? 3 into 5 into 7. अब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? ये +1 कर करके आया. तो a का अगर यहाँ स्क्वायर का पावर अगर 2x होता और ये +1 करके आता, तो आप कह रहे हो 2x is equal to 2, x is equal to 1. अगर b का पावर 2y स्क्वायर करने के बाद पावर 2y होता तो ये +1 करके आया ना, दैट मीन्स 2y is equal to 4, y is equal to 2. वैसे c का पावर अगर 2z होता, 2z ये +1 करके आया बेटा, दैट मीन्स 2z is equal to 6, z is equal to 3. तो ओरिजिनल नंबर कौन से फॉर्म में होता? a का पावर 1,
b का पावर 2 एंड c का पावर 3। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका क्यूब चाहिए, क्यूब। तो a क्यूब b का पावर 6 बन जाएगा एंड c का पावर 9 बन जाएगा। अब इसके फैक्टर कैसे आएंगे, फैक्टर ऑफ क्यूब, इसको +1 कर दो, इसको भी +1 कर दो और इसको भी +1 कर दो। तो 280 फैक्टर्स, दिस इज मैक्सिमा। अब आपको कैसे पता पड़ेगा मैक्सिमा हुआ, जितने ज्यादा प्राइम्स होंगे उतने ज्यादा मल्टीपल्स आएंगे, यहाँ पे उतने ज्यादा फैक्टर्स आएंगे। दिस इज योर आंसर। तो जो हम केस अज्यूम करते हैं ना, ऐसा ऐसा अज्यूम कर लिया, ऐसा अज्यूम कर लिया, ये सब मॉक के सॉल्यूशन में अच्छा लगता है। एक क्वेश्चन को हम 15 मिनट में बनाएंगे, व्यू टाइम बढ़ेगा, कंपनी का एवेल्युएशन बढ़ेगा, यू कैन कम्पीट विद नेटफ्लिक्स। इनफैक्ट एक कंपनी के फाउंडर ने कहा है, अवर कंपटीशन, कोचिंग क्लास, अवर कंपटीशन इज नॉट द अदर कोचिंग क्लास, अवर कंपटीशन इज नेटफ्लिक्स। उनको खाली व्यू आवर्स बढ़ाने हैं। आप और हम व्यू आवर्स के लिए नहीं काम कर रहे हैं, आप और हम स्पीड के लिए काम कर रहे हैं। तो 105 को जितने हिस्सों में तोड़ोगे उतने ज्यादा फैक्टर्स आएंगे, जितने ज्यादा फैक्टर्स आएंगे, वही तो बोल रहा है, फैक्टर्स बढ़ा के बताओ क्यूब के। फोकस ऑन दिस पार्ट वन मोर टाइम। ये क्या किया आपने, क्योंकि इसके 3 हिस्से मैंने इमेजिन कर दिया, 3 हिस्से होंगे और स्क्वायर भी है, स्क्वायर मतलब पावर 2x 2y 2z मल्टीपल ऑफ 2। अब ये 2x को +1 करके 3 आया, दैट मींस 2x इज इक्वल टू 2। ये 2y को +1 करके 5 आया, दैट मींस 2y इज इक्वल टू 4। ये 2z को +1 करके आया है 6, दैट इज इक्वल टू 3। तो n का क्यूब विल बी a क्यूब b टू द पावर 6 c टू द पावर 9। अब उसके फैक्टर गिनने हैं। टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड दिस, देन कमेंट डन। टू एटी इज द आंसर। देखो ऑप्शन में भी सबसे बड़ा आंसर क्या है, 280। वी आर ऑन द राइट ट्रैक। ये भी कैट का ही है क्वेश्चन, ट्राई। टेक 2 minutes, try. Once you are done, comment your answers.
in this number 10800, we are looking for multiples of 3 but not multiples of 9. Multiples of 3 but not multiples of 9. तो पहले तो आप इसको ब्रेक करना सीखो. People who are not comfortable with factorization, learn this trick. आखिरी में 100 है. 100 means 2 to the power 2 and 5 to the power 2. सामने 108 है. 108 क्या चीज का मल्टीपल है? 4 into 27. हो गया फैक्टराइज. 2 square 2 square 2 to the power 4. 3 cube 5 square. अभी what we want is a multiple of 3. 3 को बाहर रख लो. तो this has been taken care of. अब मैटर नहीं करता. Now count factors for this. +1 5 +1 3 +1 3. There are 45 multiples of 3. अब 3 के मल्टीपल में से ही what happens? 9 का मल्टीपल बनता है. एक और 3 बाहर आ जाएगा. Now already a multiple of 9. अब गिनो इसके फैक्टर्स. +1 +1 +1. There are 30 factors which are multiples of 9. ये अपने को चाहिए और ये अपने को नहीं चाहिए. Subtract both. 15 is the answer. और देखो, this is method 1. Learn this. Method 2. N is equal to 3 into 2 to the power 4, 3 to the power 2, 5 to the power 2. ये बाहर रखने से आपने ऑलरेडी मल्टीपल बना दिया 3 का. कैन आई से 3 के मल्टीपल में और 3 मिलेगा तब 9 बनेगा. आप 9 नहीं चाहते हो तो और 3 नहीं चाहिए. It is already a multiple of 3. I do not want it to become multiple of 9. मतलब I don't want any more 3s. मेरे को और 3 नहीं चाहिए. तो बाकी फैक्टर्स गिन लो. 4 to the power 2 to the power 4 plus 1 5, 5 to the power 2 plus 1 3. तो इसके भी तो 15 फैक्टर्स हैं. तो you saved couple of steps. 3-4 स्टेप आपके बच गए if you think in this manner. A multiple of 3 becomes a multiple of 9 जब आप 3 लगाते हो. मुझे 9 नहीं चाहिए तो मुझे 3 भी नहीं चाहिए एक्स्ट्रा. तो सारे 3 कट कर दिए. I don't want any more 3s. Is the method 2 clear to you? चलो, moving on. थोड़ा संभल के. These are the kind of questions which I've been covering in my sessions for, let us say, since I'll say 2020 or something. ऐसे question 2023 में आए, almost similar. A 2-digit number has exactly 3 factors, excluding 1 in itself. What is the sum of all the values of the number? Try. A 2-digit number
has three factors excluding one and itself. One and itself. क्योंकि 2 डिजिट नंबर है, अप टू क्या होगा, अप टू 99 होगा। तो ये क्वेश्चन 1.5 मिनट का भी नहीं है, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड। कोई भी नंबर हो 1 से और खुद से हमेशा डिवाइड होता है। इफ यू डू नॉट काउंट 1 and the number, you have how many factors? You have 3 factors. So if I count both, how many total factors do we have? Total factors is 5. अब आप देखो, आप जब फैक्टर गिनते हो तो आप पावर्स को बढ़ा बढ़ा के मल्टीप्लाई करते हो ना, तो जाके फैक्टर्स आते हैं। अब देखो 5 बनता है क्या, किसी के मल्टीपल से 5 बनता है क्या? 5 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कैसे किसी और के मल्टीपल से बनेगा? इसका मतलब है जो आपका नंबर है इट इज एक्चुअली अ प्राइम टू द पावर 4। +1 होके ही 5 बनेगा। 5 कैन नॉट बी क्रिएटेड थ्रू मल्टीपल ऑफ एनीथिंग। 5 इज अ प्राइम नंबर। टोटल फैक्टर्स 5 हैं। द ओनली पॉसिबिलिटी इज n इज इक्वल टू a टू द पावर 4। अगर टोटल फैक्टर मान लो 6 होते, टोटल फैक्टर 6 होते, तो मैं कहता 1 into 6 से बनता है, तो नंबर कुड बी a टू द पावर 5। 6 कैसे बनता है? 2 into 3 से बनता है, तो नंबर कुड ऑल्सो बी a to the power 1 b to the power 2। क्योंकि 6 कैन बी ब्रोकन डाउन। इफ इट कैन बी ब्रोकन डाउन देयर कैन बी मल्टीपल वेज, बट 5 is the number of factors। 5 cannot be broken down, so n is equal to a to the power 4। अब हमें क्या चाहिए? ये 99 तक चाहिए भाई। 2 का पावर 4 is 16, 3 का पावर 4 is 81। जैसे ही 5 का पावर 4 गया 625। Is it a two digit number? No. Can you count 4 to the power 4? अरे नहीं भाई, a must be prime, तब तो फैक्टर गिनोगे। 4 का पावर 4 कैसे करोगे प्राइम? नॉट पॉसिबल। तो देर आर ओनली 2 नंबर्स। हमें हाउ मेनी नंबर्स नहीं चाहिए, what is the sum of all numbers चाहिए। What is sum of both numbers? 97 is the sum। ये चाहिए आपको। राइट साइड में आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, किसी नंबर के अगर देर आर 6 फैक्टर्स, इट कुड बी 1 into 6, तो दिस इज द पावर। इट कुड बी 2 into 3 6, तो ये 2 जो है प्राइम की पावर को बढ़ा के आया, तो प्राइम की पावर 1। जो 3 है प्राइम की पावर बढ़ा के आया, तो प्राइम की पावर 2। Confirmation on this?
थोड़ा सिंबल के, यू नो एवरीथिंग अबाउट फैक्टर्स नाउ, कैसे गिनते हैं सो ऑन सो ऑन। अब कुछ ऐसे सवाल आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स, थोड़ा सिंबल के देखो। The number of positive factors that would divide 10 to the power 100 but will not divide 10 to the power 99. एक ऑप्शन ई और लगा दो, none of these. Take 2 to 3 minutes. I am calling these A and B. A is 2 to the power 100 into 5 to the power 100. What is B? 2 to the power 99 and 5 to the power 99. See, do you understand? Every factor of B can divide A, क्योंकि B का जो पावर है 2 का, it is part of A. The power of 5 is 99. It can divide this. तो उल्टा सोचो, how many factors does A have? 101 into 101 कितना हो जाएगा? What is 101 का स्क्वायर? बहुत मेथड सीखे आपने, लर्न लॉट ऑफ मेथड्स। ये 100 से +1 है, तो 102 and 01। अब इसके कितने फैक्टर्स हैं? 99 + 1, 100 into 100 which is 10,000। अब जो भी फैक्टर इसके हैं एक्स्ट्रा, वो नहीं हो सकते किसके? बी के, बिकॉज बी का हर एक फैक्टर ए को डिवाइड करेगा। एवरी फैक्टर ऑफ बी विल डिवाइड ए। तो जो ए के एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं दे कैन नॉट डिवाइड बी। ए के एक्स्ट्रा फैक्टर्स कितने हैं? 201। अब इसे भी प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं। यू कैन थिंक ऑफ मोर वेज टू प्रूव दिस। कैन आई से एक नया नंबर ले लिया मैंने c, क्योंकि देखो 2 की पावर 99 तो यहां पर है। अगर मैं 2 की पावर 100 ले लूं यहां से, अब जो भी आएगा ये नंबर, जो भी ये नंबर आएगा, ये कभी डिवाइड नहीं करेगा b को, क्योंकि 2 की पावर 100 आ गई। तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 99, ऐसे 100 नंबर आ गए। देयर आर 100 सच नंबर्स। अगर मैं इमेजिन कर लूं जो नंबर है c, उसमें 5 की पावर 100 आ चुकी है, 5 की पावर 100 आ चुकी है। अब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 99,
अब अगर कुछ भी आ गया, इट इज नेवर डिवाइड, तो ऐसे भी कितने नंबर हो गए, 100 नंबर हो गए, ये समझ रहे हो। अब ऐसा भी तो एक नंबर होगा ना जिसमें दोनों की पावर 100 होगी, तो ऐसा एक नंबर होगा। 100 नंबर्स ऐसे, 100 नंबर ऐसे, 1 नंबर ऐसा, टोटल नंबर्स कितने हो गए, 201। जो नीचे का तरीका है इज मोर मैनुअल। आपने डेलिबरेटली एक ऐसा नंबर ले लिया 2 टू द पावर 100, ये डिवाइड ही नहीं कर सकता बी को। अब उसके बाजू में कुछ भी आ जाए, 5 की पावर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 1099 आ जाए, ऐसे 100 नंबर हो गए। क्योंकि 5 की पावर 0 टू 99 100 नंबर। वैसे ही आपने उस नंबर को इमेजिन कर लिया, उस फैक्टर सी को इमेजिन कर लिया आपने 5 की पावर 100, अब 2 का कोई भी पावर आए, 100 नंबर्स। अब एक ऐसा भी तो नंबर बनेगा जिसमें दोनों की पावर ही 100 होगी। इसमें 5 की पावर 100 कहीं गई थी क्या, नो। इसमें कहीं 2 की पावर 100 गई थी क्या, नो। लेकिन 2 और 5 दोनों की पावर 100 तो आएगी ना यहाँ पे एक फैक्टर में, वो भी काउंट होगा। तो दैट हाउ मेनी फैक्टर्स, 201 फैक्टर्स which will never divide b. Is the answer clear to everyone? Along with the method, there are two methods on the screen right now. Guys, confirmation on this.
3 slots combined, there have been 5 questions on factors. Confirmation on this, is this clear to everyone? हमने पहले n के फैक्टर्स निकाले, तो n के फैक्टर्स 144 के नीचे 143 फैक्टर्स, फिर हमने n स्क्वायर के फैक्टर्स निकाले 825, तो बीच में n आएगा, जैसे 144 के बीच में 12 आता है, उसके नीचे 824 का हाफ 412 फैक्टर्स। अब नीचे 412 फैक्टर्स, ऊपर 143 फैक्टर्स, जो उनके बीच का गैप है वो सारे नए फैक्टर्स हैं। वो n स्क्वायर में तो होंगे बट वो n में नहीं होंगे। वेरी गुड। वो बीच में कुछ देर के लिए ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है बिकॉज यहाँ से माइक का प्रॉब्लम था, टर्न ऑन। रिकॉर्डिंग अभी आपको वैसे भी आई एम नॉट गिविंग यू गाइस, कभी मिला तो बीच का 2 क्वेश्चन 3 गायब रहेगा। चलो ट्राई दिस, इट्स अ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, इट्स अ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, कुछ नया देखने सीखने समझने मिलेगा। A is a natural number which has 12 factors. 2A has 15 factors. 3A has 16 factors. How many factors will 6A have? कितने factors होंगे 6A में? आपको तो ये पता ही नहीं है कि जो A है उसमें 2 पहले से है या नहीं है, उसमें 3 पहले से है या नहीं है। I'll explain. देखो, एक रैंडम, forget this question, अगर एक नंबर होता x जिसमें let us say 3 की पावर 2 into 5 है, इसके कितने फैक्टर होते खुद के? इसके फैक्टर होते 3 into 2 6 फैक्टर्स। अब सोचो अगर मैं x में बाहर से एक नया प्राइम लेके आता, एक नया प्राइम, ऐसा, ये नया प्राइम है, इट इज नॉट 3, इट इज नॉट 5, एक न्यू प्राइम आ गया, कैन आई से अब यहाँ पे आ जाएगा 2 into, यहाँ से 1 आ जाएगा 3 और यहाँ से 1 आ जाएगा तो 2। पहले 6 फैक्टर थे, अभी फैक्टर क्या हो गए? डबल। आप अगर एक नया प्राइम लाओगे, you bring in a new prime, so do you see factors become double? फैक्टर डबल हो जाएंगे अगर आप नया प्राइम लाओगे। अगर मैं यहीं पे x में एक और मल्टीपल 3 का ले आता तो ये आता 3 की पावर 3 into 5, तो अब इसके फैक्टर कितने होते? 4 into 2 8। पहले 6 फैक्टर थे, अभी 8 फैक्टर है। लैंग्वेज सुनना, आप एक प्राइम लेकर आए, आप बाहर से प्राइम लेकर आए, लेकिन वो नया प्राइम नहीं था, दैट इज आपके फैक्टर भी डबल नहीं हुए। अर्लियर फैक्टर्स वर 6, नाउ द फैक्टर्स आर 8।
आप मुझसे कह रहे हो जो नंबर ए है उसके 12 फैक्टर्स हैं, 12 फैक्टर्स हैं। कैसा पावर आई डोंट नो, लेकिन जब आपने इसको डबल किया तो अब आप कितने फैक्टर कह रहे हो? 15। आर द फैक्टर्स डबल? नो, क्योंकि फैक्टर डबल नहीं हुआ तो मुझे पता पड़ गया इसमें पहले से 2 था। देयर वाज ऑलरेडी अ 2 विद इन दैट नंबर, उस नंबर के अंदर में 2 था। अब देखो, आपने जब इसको ट्रिपल किया, 12 फैक्टर्स थे, अभी 16 हो गए। फैक्टर डबल हुए क्या? आर द फैक्टर्स गेटिंग डबल्ड? नहीं। तो इससे पता पड़ता है कि ऑलरेडी 3 भी था। 3 was already within that number, was part of that number. अब इसके अलावा कुछ अगर है तो I do not know, इसके अलावा अगर कुछ है तो I do not know। ये कोई भी चीज होती है। अब देखो, आप फैक्टर कैसे गिनते हो? इसको +1, इसको +1 करके मल्टीप्लाई करते हो, फैक्टर्स x +1 करके और y +1 करके मल्टीप्लाई करते हो। ये जो भी नंबर होगा इसका कंट्रीब्यूशन k मान लो। अब 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो, आई डो नॉट नो। इसका कंट्रीब्यूशन k मान लो। तो आपके टोटल फैक्टर कितने हैं? 12। आप जब इसको डबल करोगे तो जो 2 है उसका पावर क्या हो जाएगा? +1। 3 का पावर विल नॉट चेंज, और ये जो भी था ये कैसे बदलेगा? नाउ हाउ मेनी फैक्टर्स विल यू हैव? फैक्टर्स में ये x +2 बन जाएगा, y तो बदलेगा नहीं, k तो पता ही नहीं क्या है, तो नाउ द फैक्टर्स आर 15। वैसे ही when you make it 3a, 2 का पावर विल नॉट चेंज, आप ट्रिपल लगा रहे हो यहां से, तो 3 का पावर विल इंक्रीज। और ये क्या है? आई डोंट नो। ऐसा कुछ है भी कि नहीं? यू एंड आई डू नॉट नो। तो यहाँ पे फैक्टर x +1 देगा, फैक्टर y +2 आएगा, और k वैसे ही रहेगा। फैक्टर कितने हो गए? 16। अब यार इतना सब कौन सॉल्व करे? तो व्हाट यू डू इज यू डिवाइड द फर्स्ट। इनको डिवाइड करते ही ये और ये कैंसिल, तो व्हाट यू हैव इज x +1 अपॉन x +2 is equal to 12 upon 15 is equal to 4 upon 5। समझ में आ रहा आपको? x का वैल्यू 3 है, +1 4, x का वैल्यू 3 है, +2 5, x इज इक्वल टू क्या आ गया? 3। आप ऐसा करो, फर्स्ट एंड लास्ट का रेशो ले लो। आप अगर फर्स्ट एंड लास्ट का रेशो लोगे, दिस विल बी कैंसल्ड, ये बच जाएगा, द लास्ट पार्ट विल बी कैंसल्ड। तो क्या आ गया आपके पास? y +1 अपॉन y +2 इज इक्वल टू आ गया 12 अपॉन 16 विच इज 3 अपॉन 4। अभी देखो, ये अगर 2 हुआ तो +1 3, 2 हुआ तो +2 4, तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको? 2 मिल गया। अब देखो, अगर ये 2 और ये 3 है, ये अगर 3 और ये 2 है, तो फैक्टर्स में यहां पर 4 और 3 आ गया, तो k डज नॉट मैटर, k इज इक्वल टू 1। आप इसको ऊपर पुट कर दो तो k इज इक्वल टू 1 आ गया। तो व्हाट इज द एक्चुअल नंबर? एक्चुअल नंबर इज 2³ into 3²। अब उसमें क्या मल्टीप्लाई करने जा रहे हो आप? यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 6 इन इट। इसमें अगर आप 6 लगा दोगे तो a का पावर 3 और 2 में बढ़ जाएगा। दिस विल बिकम, क्योंकि आप 6 लगा रहे हो, 6 लगा रहे हो मतलब 2 लगा रहे हो, तो 2 का पावर बढ़ गया, 3 का पावर बढ़ गया, 2 to the power 4 into 3 to the power 3, ये आपका नंबर आ गया 6 से। इसके कितने फैक्टर्स हैं? हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर फॉर दिस नंबर? तो ये +1 करोगे तो 5, ये +1 करोगे तो 4, इसके 20 फैक्टर्स हैं। ये लास्ट स्टेप है, ये लास्ट स्टेप है आपका, दिस इज योर लास्ट स्टेप। स्पेस कम पड़ रहा है तो आई एम राइटिंग इट हियर। जो राइट साइड में है ये ऑब्जर्वेशन देखो, या तो आप एग्जाम में खुद ऐसा ऑब्जर्व करो, विच इज हाईली अनलाइकली, आप प्रेशर में रहोगे, घबरा जाओगे। सो समबडी हैज टू शो यू दिस बिफोर एग्जाम्स। बेसिक आइडिया इज व्हेन यू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्राइम, आप जब एक नया प्राइम लेकर आते हो, इन दैट केस द नंबर ऑफ फैक्टर्स डबल। आप अगर सेम प्राइम लेके आते हो तो बढ़ेगा, बट डबल नहीं होगा।
When you move from A to 2A, factors move from 12 to 15. अब आपको सिखाने के लिए ये सब किया गया था. If you come across a question like this again, you directly focus on ratios of factors. 12 upon 15, 4 by 5. 12 upon 16, 3 by 4. तो आपको पता पड़ जाएगा कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है. तो x और y का वैल्यू जल्दी मिलेगा आपको. You can find value of x and y faster. k कितना आया हमारा? k is equal to 1 आया. That means 2 और 3 के अलावा कोई प्राइम है ही नहीं वहां पे. There is no prime other than 2 and 3. Confirmation on this? Done. Very good. चलो. हाँ, अब ये चीज है जिसका फॉर्मूला में डिराइव नहीं करवाता हूं. I'll just give you the outcome. What is the question? In how many ways can 1000, 1000 be written as sum of two or more consecutive natural numbers? आपको consecutive natural numbers के थ्रू 1000 लिखना है. How many ways are there? दो या दो से ज्यादा. तो इसका हमेशा आंसर ऐसा कभी बोलेगा. In how many ways can n be written as sum of two or more? और more. देखो ये a है तो a plus 1 है. a plus 1, a plus 2 consecutive. Two or more consecutive numbers में how many ways? How many ways? So the answer is always number of odd factors of n minus 1. आप अगर ना मुझे 10 से 12 मिनट दोगे ना तो नॉट ओनली आई विल शो यू डेरिवेशन में आपको इसके सारे वेज मैनुअली निकाल के दूंगा. 1000 क्या है? व्हाट इज 1000? 1000 इज 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब. ऑड फैक्टर्स कहां से आते हैं? ऑड फैक्टर्स आते हैं 2 को कैंसिल करके. इसके 4 ऑड फैक्टर्स हैं. तो ऑड फैक्टर्स minus 1. There are 3 ways in which I can write it as addition of 2 or more consecutive natural numbers. Number of odd factors minus 1 is the answer. I have never seen this kind of question in any of the exams, but आपको mocks में मिल जाएगा, books में PDFs में मिल जाएगा, तो I felt I should cover it here for you. In how many ways can 1000 be written as addition of 2 or more consecutive natural numbers? Three ways.
नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ n माइनस 1। इसके 4 ऑड फैक्टर्स क्यों है? क्योंकि ऑड फैक्टर 5 क्यूब से आएगा, तो पावर को +1 कर देते हैं। ये और अच्छा सवाल, cat plus level. nx is a family of natural numbers for different values of x, where x is a natural number. The numbers in the family share a common property of having 24 factors in each of the numbers. All the elements of n are arranged in the ascending order as follows: n1, n2, n3, and so on. Now, the digital sum of a number is defined as sum of all digits of the number until we get single digit. What is the digital sum of n1? What is the digital sum of n1? Question is not easy, but the concept is very simple. Concept बहुत आसान है. उसको family of numbers nx, n1, n2, n3 खूब घुमा दिया. पूरा राउंड अबाउट यहां से वहां घुमा दिया ऐसे. फैमिली को सब छोड़ो. दिस इज नॉट फास्ट एंड फ्यूरियस फॉर द फैमिली, डजंट मैटर. आपको सबसे छोटा नंबर चाहिए जिसके 24 फैक्टर्स हो. nx is a family of natural numbers for different values of x, where x is a natural number. The numbers in the family share a common property having 24 factors. हर एक नंबर के 24 फैक्टर्स हैं और सबसे छोटा नंबर n1 है. तो आपको मिनिमम नंबर निकालना है with 24 फैक्टर्स. 24 फैक्टर वाला नंबर आपको निकालना है. अब मैंने आपको दिखाया था कि 24 को पहले लिखते कैसे हैं. आई कैन राइट इट एज 1 into 24, 2 into 12, 2 into 2 into 6, 2 into 2 into 2 into 3 ऐसे लिख सकते हैं भाई. 3 into 8 भी लिख सकते हैं. लिखने के तरीके बहुत सारे हैं आपके पास. 4 into 6 लिख सकते हैं. अब क्या हो रहा है यहाँ पे, प्लीज ऑब्जर्व. अगर आपने इसको ऐसे लिखा होता, ये फैक्टर, दीज आर व्हाट फैक्टर्स. फैक्टर कहां से आता है? प्राइम की पावर को बढ़ा के. आप समझ रहे हो? अगर ये आपका तरीका है 24 फैक्टर निकालने का, तो ये आपका नंबर है. तो अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू भी ले लोगे 2 to the power 23, पता नहीं कहाँ 1000 10,000 क्रॉस कर जाएगा. अब अगर आप ऐसा लिखोगे नंबर को, ऐसा लिखोगे फैक्टर को 2 into 12, मतलब आपका नंबर होगा a into b का पावर 11. सोचो, इसको मैंने 3 ले लिया, इसको मैंने 2 ले लिया, तो ये 1000 के आसपास आ गया. इंटू 3 3000. ये कहाँ 1000 into 1000 जा रहा था. हमें n को कम करना है. तो अब देखो, जैसे आपने ये हिस्सा ले लिया, ऐसे लिखने का तरीका ले लिया आपने. दैट मीन्स इट इज a into b into c to the power 5. अब नंबर क्योंकि छोटा चाहिए, कैन आई से आई कैन इमेजिन दिस लाइक 3 into 5 into 2 to the power 5. I can imagine this as 3 into 2 to the power 11. एक बार रफ आइडिया में देता हूं कितना होगा. ये होता है 1024 into 2 into 3, 2 into 3 into 1024, मतलब 6144. ये क्या दिख रहा है? दिस इज 15 into 2 की पावर 5, 32. ये तो 450 500 में रुक गया. देखो आप, 15 into 30 450, 450 plus 30 480 में रुक गया. छोटा हो गया ना. आपको छोटा नंबर चाहिए. अगर मैं ऐसा इमेजिन करूं, ऐसा, दिस इज a into b into c into d का स्क्वायर. अगर 24 ऐसे लिखा होता, तो देखो, यू आर ट्राइंग टू डिक्रीज द नंबर. मैं ट्राई कर रहा हूं. इफ दिस वाज 3 into 5 into 7 into 2 स्क्वायर. 2 स्क्वायर क्या होता है? 4. 4 into 5 क्या होता है? 20. 20 into 21 क्या होगा?
20 इंटू 21 420। अब देखो इससे छोटा नंबर कैसे बनेगा, क्या इनसे बन सकता है? लेट मी गिव इट अ ट्राई। इफ आई राइट द नंबर एज a स्क्वायर b टू द पावर 7, अब अगर मिनिमम 2 का पावर भी 7 लोगे, 2 का पावर 7 इज 127 128 इंटू 9, 120 टू 9, 900 क्रॉस कर गया, ये छोटा है। इवन इफ यू टेक लाइक दिस, तो आपका n क्या हो जाएगा, a क्यूब इंटू b की पावर 5। इसको 2 लोगे तो 32, इसको 3 लोगे 27, 27 इंटू 32 आराम से 700 क्रॉस कर गया। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n इज दिस। तो एज अ ऑब्जर्वेशन सीखो, अगर आपको n को कम करना है तो फैक्टर्स के ज्यादा टुकड़े करने पड़ेंगे आपको। फैक्टर्स को जितना आप तोड़ोगे उतना n का वैल्यू छोटा होगा। मोर प्राइम्स तो आपके फैक्टर जल्दी अचीव होंगे। तो आपका सवाल था व्हाट इज द डिजिटल सम ऑफ दिस? डिजिटल सम ऑफ दिस इज 420। मैं एक बार मैपिंग कर देता हूं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो इसकी मैपिंग जो है आपके लेफ्ट साइड में, दिस इज फॉर 1, दिस इज फॉर 2, दिस इज फॉर 3, दिस इज फॉर 4। ये 5 है, ये 6 है, तो दिस इज फॉर 5 एंड दिस इज फॉर 6। राइट साइड में क्या है, फैक्टर्स। ये करंट कैट स्टैंडर्ड है। पिछला क्वेश्चन वाज अ फॉर्मूला, दिस वाज अ फॉर्मूला, दिस इज करंट कैट स्टैंडर्ड। सोचना पड़ेगा कैसे बढ़ाएं फैक्टर, कैसे कम करें फैक्टर्स। Take your time, think over this, confirm. So a new thing has been introduced, pure factor. Take your time, take 2-3 minutes, try.
क्या नया कॉन्सेप्ट है? प्योर फैक्टर. A pure factor of a natural number n is a factor of n which has only one prime factor. प्योर फैक्टर उसको बोलते हैं जिसका एक ही प्राइम फैक्टर है. जैसे 12 के दो प्राइम फैक्टर्स है तो ये प्योर नहीं है. 4 इज अ प्योर नंबर, 8 इज अ प्योर नंबर, 6 इज अ प्योर नंबर. इन सब का एक ही प्राइम फैक्टर है 2. जैसे 9 इज अ प्योर नंबर, 27 इज अ प्योर नंबर एंड सो ऑन. इनका एक ही प्राइम फैक्टर है. अ नंबर विच हैज ओनली वन प्राइम फैक्टर इज प्योर. तो 2 भी तो प्योर नंबर हुआ ना, 3 भी तो प्योर फैक्टर हुआ ना. Sn is sum of all pure factors of n. What is the value of S 3000? 3000 S मतलब कि 3000 के जो भी प्योर फैक्टर्स हैं उनका सम निकालना है. Sn is the sum of all pure factors of n. तो पहले तो 3000 है क्या? 3 into 1000. 1000 क्या है? 10 क्यूब. तो 2 क्यूब एंड 5 क्यूब. ये आपका नंबर है. तो इसके प्योर फैक्टर्स का हमें सम चाहिए. देखो इसका एक प्योर फैक्टर 3 है, दूसरा प्योर फैक्टर क्या है? 2 है, 4 है, 8 है. 5 की तरफ से प्योर फैक्टर होंगे 5, 25, 125. अब मैं 1 को गिन सकता हूं ना भाई. 1 का भी तो खुद ही फैक्टर होता है 1, लेकिन 1 का कोई प्राइम फैक्टर होता है क्या? डज इट हैव अ प्राइम फैक्टर? नो. तो बस बेटा आपको इनका सम पूछ रहे हैं. इसका फैक्टर 125 और 125 का एक ही प्राइम फैक्टर है तो ये प्योर फैक्टर हुआ. 25 इज अ फैक्टर, उसका भी एक ही फैक्टर तो ये भी प्योर हुआ. एड दीज नंबर्स, जितना लॉजिकली करो उतना अच्छा. दिस इज इक्वल टू 10, दिस इज इक्वल टू 7, 17 आ गया. दिस इज इक्वल टू 150 प्लस 5, 155 आ गया. सो 172 इज द आंसर. 1.5 मिनट का क्वेश्चन है. इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कवर्ड ऑन द राइट साइड, थोड़ा देखो. प्योर नंबर वही है जिसका एक ही प्राइम फैक्टर है. इसका मतलब नंबर शुड बी प्राइम का स्क्वायर, प्राइम का क्यूब, प्राइम का पावर 4. दैट्स इट. दो प्राइम नहीं हो सकते उसमें. ये एक बार समझे तो कंफर्म करो. देखो सबसे पहले तो व्हाट इज अ प्योर फैक्टर. भाई प्योर फैक्टर वो होगा जिसमें एक ही प्राइम फैक्टर होगा. जैसे 4, 4 किससे डिवाइड होता है? केवल 2 से. किसी और से डिवाइड होगा 3 से, 5 से नहीं. तो ये प्योर फैक्टर, ये प्योर नंबर है, एक ही प्राइम से डिवाइड होगा. जैसे 8, ये भी केवल 2 से डिवाइड होगा, 3, 5 से नहीं होगा. तो तभी प्योर होगा जब एक ही प्राइम से बनेगा. अ नंबर शुड बी ग्रेडेड बाय सेम पावर ऑफ प्राइम. पावर 1 हो, पावर 2 हो, पावर 3 हो. हमें कह रहा है कि जो 3000 है उसके प्योर फैक्टर आप निकाल के ऐड करके बताओ. 3000 बनता है 3 से, 2 के क्यूब से और 5 के क्यूब से. तो इसके प्योर फैक्टर्स होंगे 2, 4 और 8. 16 आ सकता है क्या? 16 क्या होगा? पावर 4, वहां जाना नहीं है. 8 केवल 2 से डिवाइड होता है. ये प्योर है, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है. इनको ऐड करना आपको. प्योर फैक्टर इज अ नंबर which has only one prime factor. 2, 4, 8, 16, 32 इन सब का एक ही फैक्टर है 2. 3, 9, 27, 81 इन सब का एक ही फैक्टर है 3. तो आपको बेसिकली वो नंबर ऐड करने हैं जो प्राइम की पावर बने, सिंगल प्राइम की पावर. और 3000 को डिवाइड करना जरूरी है. 3000 के फैक्टर हैं सारे.
देखो नई नई चीज देखने मिल रही है, और क्या चाहिए। A two-digit number has three factors excluding one and itself. ये आई थिंक मैंने करवाया आपको, दिस क्वेश्चन वी ऑलरेडी हैव सॉल्व्ड। अगर उसका एक फैक्टर और खुद को छोड़ के 3 है तो उसके 5 फैक्टर्स हैं। ये करवाया, वी हैव डन दिस। ये लो, दिस इज समथिंग न्यू। टेक योर टाइम, गिव इट अ शॉट, टेक 3 मिनट्स। अभी तक हमने क्या देखा है, हाउ टू काउंट फैक्टर्स अंडर कंडीशन। अब फैक्टर के भी फैक्टर गिनने हैं। How many factors of 1296 will have 3 factors? पहले तो हम ये समझते हैं what kind of numbers have exactly 3 factors. आप जब कहते हो factors are 3 तो ब्रेक होता नहीं है, 3 into 1 3 तो ब्रेक होता नहीं है किसी में। दैट मीन्स जो आपका नंबर है इट मस्ट बी स्क्वायर ऑफ अ प्राइम। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। व्हेन फैक्टर्स आर ऑड द नंबर मस्ट बी अ स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या चीज का, क्योंकि केवल 3 फैक्टर्स हैं, देयर आर ओनली 3 फैक्टर्स, मतलब नंबर मस्ट बी प्राइम स्क्वायर। तो आपसे ये पूछ रहे हैं जो 1296 है ये कितने प्राइम्स के स्क्वायर से डिवाइड होता है। जैसे मान लो आई डू नॉट नो, अगर 1296 जो है ये 4 से अगर डिवाइड होता, अगर, तो 4 का फैक्टर 1 है, 2 है और खुद है। अगर ये 9 से डिवाइड होता तो 9 का फैक्टर 1 है, 3 है, खुद है। ये बोल रहा है फैक्टर के भी 3 फैक्टर होने चाहिए। अगर ये 25 से डिवाइड होता तो फैक्टर 1 है, 5 है और 25 है। ये बोल रहा है द नंबर शुड डिवाइड 1296 और उस नंबर के खुद के 3 डिवाइजर होने चाहिए। यहां से हमें पता पड़ गया जो डिवाइजर है, जो नंबर है, वो प्राइम का स्क्वायर होना चाहिए। अब 1296 को ब्रेक करने की कोशिश करो। बड़ा खतरनाक सा नंबर है, बट ध्यान देना। 2 + 1 3 + 6 9 + 9, मतलब 9 का मल्टीपल है, सीधा 9 को बाहर निकालो, 9 इंटू, और देखो आखिरी में 96 है, मतलब 4 का भी मल्टीपल है, 9 और 4 का मल्टीपल हो गया। अब क्या बचता है हम देख लेते हैं।
अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूं, 1 टाइम्स 9 carried over 3, 4 टाइम्स 3 carried over 3, 144. 9 को उठा के 144 बचा, 4 से डिवाइड किया 36 बचा। तो टोटल ये नंबर है क्या? 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। बेसिकली ये नंबर 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 है। अब क्योंकि केवल 2 और 3 है और मुझे क्या चाहिए? प्राइम का स्क्वायर चाहिए। मतलब कितने प्राइम के स्क्वायर डिवाइड करेंगे? 2 स्क्वायर, ये एक नंबर आएगा, दूसरा 3 स्क्वायर, ये दूसरा नंबर आएगा। क्या कोई तीसरा प्राइम है इसमें? नो। तो यही क्वेश्चन था कि a खुद 4 है और 4 इसको डिवाइड करता है और 4 के खुद के 3 डिवाइजर्स हैं, ये क्वेश्चन था। 9 इसको डिवाइड करता है, b 9 है और 9 के 3 डिवाइजर हैं, ये क्वेश्चन था आपके पास। ऐसे दो ही नंबर है, क्योंकि आपको प्राइम का स्क्वायर चाहिए और प्राइम दो ही है तो उनके स्क्वायर भी दो ही होंगे। So after understanding how to count factors, how to count prime factors, we are into the zone of logic and reasoning here. Confirm करो, समझा आपने को ये? Are you able to understand and keep up with this? Guys, consider 4-digit numbers for which the first two digits are equal and the last two digits are also equal. How many such numbers are perfect squares? ऐसे कितने numbers होते हैं which are perfect squares? Now, if you guys have attended all lectures from the beginning, ये मैंने आपको वैदिक मैथ्स के सेशन में करवाया है क्वेश्चन। How many numbers are there in which first two digits are same and last two digits are same and it is also a perfect square? How many? Question है how many? तो how many वाले सवालों में ऑप्शंस का कोई रोल नहीं होता। There is no role for options when the question is about how many. मैं आपको एक और रूल समझाना चाहता हूं, इसे आप कहीं पे हाईलाइट कर लो। कभी भी ना आपको अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर के डिजिट समझने हैं, आखिरी के 2 डिजिट, तो 1 स्क्वायर से लेके 25 स्क्वायर तक आप लिख लो। जो भी अलग अलग वैल्यूज हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी। जो CD है उसके बाद वैल्यू रिपीट होती है। लैंग्वेज समझो, ये मैं आपको और सिखाऊंगा व्हाइल फाइंडिंग लास्ट डिजिट्स ऑफ अ नंबर इन साइक्लिसिटी। कभी भी स्क्वायर में अगर आखिरी के 2 डिजिट देखने हैं, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज,
तो आप इनके स्क्वायर कर डालो, आप इनके स्क्वायर्स कर डालो 1 से लेके 25 तक के। यहां पे जरूरत नहीं है बट मैं बता रहा हूं आपको। अब देखो आपने क्या क्या बोला। ये क्वेश्चन अगर आप अभी किन्हीं को सॉल्व करने बोल दोगे ना, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कैट 2007-2008। इफ समबडी इज न्यू टू द प्रोफेशन, उसने पुराने पेपर नहीं देखे और सॉल्व करने आपने कह दिया, तो भैया तबियत नरम गरम हो जाएगी यहाँ पे। वी आर सेइंग द नंबर इज ऑफ द फॉर्म ए ए बी बी, और आपने ये भी कह दिया ये स्क्वायर भी है किसी का। आपको ये समझ में आ रहा है? व्हेन सेम डिजिट इज रिपीटेड साइड बाय साइड, ये किसका मल्टीपल होता है? दिस इज अ मल्टीपल ऑफ व्हाट? याद करो, दिस इज 1000 टाइम्स ए, 100 times A, 10 times B, B. 1100 A plus 11 B. 100 A plus B into 11. देखो समझा क्या आपको अभी तक? 100 A plus B. मैंने क्या कहा? ये 1000 का पोजीशन है, 100 का पोजीशन है, 10 का पोजीशन एंड 1 का पोजीशन, सबको प्लस करके आपने लिख दिया 11 कॉमन। अब आपको एक और चीज याद है, whenever a number is a square, जो भी आपका प्राइम होगा उसका पावर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। याद है आपको? ये प्राइम के फैक्टर्स में सीखा था हमने। तो अगर आपने इसमें 11 कॉमन निकाल दिया, इसका मतलब है ये नंबर भी 11 का मल्टीपल होगा मिनिमम, और उसके बाद हो सकता है कोई और स्क्वायर हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? व्हाट आई एम सेइंग हियर इज दिस इज डेफिनेटली अ मल्टीपल ऑफ 11। 11 के मल्टीपल के बाद और स्क्वायर हो सकता है। अब मैं इस पे फोकस दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो। आई एम फोकसिंग ऑन दिस नंबर। मुझे क्या चाहिए? मुझे 11 का मल्टीपल चाहिए। देखो 99A, ये तो ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 11 है, बच गया A प्लस बी। मुझे ये मल्टीपल ऑफ 11 चाहिए। याद है इंटीग्रल सॉल्यूशन में आपने सीखा है, आपको 2x प्लस 7y इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है और आपको मल्टीपल्स बनाने होते हैं। तो 11 का मल्टीपल चाहिए, तो 11 का मल्टीपल बाहर निकालो ना पहले। अब a प्लस बी कैसे बन सकता है 11 का मल्टीपल? इट कैन बी 2 प्लस 9, इट कैन बी 3 प्लस 8, इट कैन बी 4 प्लस 7, इट कैन बी 5 प्लस 6। आप उल्टा भी कर सकते हो ना, a का वैल्यू 9, b का वैल्यू 2। तो ये 4 केसेस आपको चेक करने पड़ेंगे, इनको पुट करके चेक करना पड़ेगा। मैं कर देता हूं आपके लिए चेक। देखो अगर b 9 है और a 2 है, b is 9 and a is 2, b is 9 and a is 2 यहाँ पे, तो ये आपका बन गया 209 which is 11 into 19। हमें 11 के साथ क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए। 902 चेक कर लो, 11 into 82, ये स्क्वायर है कि किसी का? नहीं, ये नहीं हो सकता। और भी है, स्क्वायर शुड नेवर एंड विथ 2, ये चेक कर लो। अगर ये 308 है या 803 है, विल बी 11 into 28, ये किसी का स्क्वायर है? नो। 803 11 into 73 किसी का स्क्वायर है? नहीं। मुझे अंदर में क्या चाहिए? 11 के साथ में स्क्वायर चाहिए, क्योंकि 11 के साथ में स्क्वायर होगा तो 11 स्क्वायर x स्क्वायर बन जाएगा, ये भी नहीं है। अब अगर मैं यहाँ चेक करूं 407, तो ये क्या हो जाएगा? 11 into 37। अगर मैं 704 चेक करूं तो 11 into 64, बना कि नहीं स्क्वायर? मतलब आपका नंबर A 7 है और B 4 है, तो आपका नंबर है 7744 विच इज स्क्वायर ऑफ 88। बच क्या बच गया? आखिरी वाला बच गया 56। तो 506 इज 11 into 46, 605 इज इक्वल टू 11 into 55। इनमें से कोई स्क्वायर नहीं है, तो एक ही स्क्वायर बना ऐसा आपका, विच इज 7744 ऐसा। दूसरा तरीका, सर इतना दिमाग क्यों लगाऊं मैं? अंडरस्टैंड दिस, अंडरस्टैंड दिस। Once you have proven that this number is a multiple of 11, so it is definitely a multiple of 11 square. Basically 11 square
22 square, 33 square, 44 square, 55 square, 66 square, 77 square, 88 square, 99 square. अगर इसके ऊपर जाओगे आप, अगर 110 ले लोगे मल्टीपल को स्क्वायर करने के लिए, तो ये जो होगा ये 5 डिजिट क्रॉस कर जाएगा ना, हमें 4 डिजिट चाहिए. आपने ये कंफर्म कर दिया इट इज अ मल्टीपल ऑफ 11. तो 11, 22, 33, 44 इनके स्क्वायर चेक कर लो. अगर आपको स्क्वायर निकालने आता है, कैलकुलेटर है, तो एक यही नंबर है जो मैच करता है. लेट अस से सर इतना सब हमको नहीं समझता. दैट इज परफेक्टली वैलिड आर्गुमेंट. इट इज 1100A प्लस 11B. फिर उसको मॉडिफाई करना, मैनिपुलेट करना, A और B के पेयर चेक करना. उसमें भी आप 6 पेयर चेक कर रहे हो, यहाँ पे 6-7 स्क्वायर चेक कर लो. Once you prove that AABB is a multiple of 11, एक बार आपने प्रूव कर दिया AABB is multiple of 11, तो 11 के मल्टीपल्स दे लो. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 का स्क्वायर चेक कर लो. उसके आगे वैसे नहीं जाना, अदरवाइज इट विल बिकम अ 3 डिजिट नंबर. के बाद 3 डिजिट का स्क्वायर बिकम्स 5 डिजिट नंबर. इसको लिख लो. आई विल गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, वो आप कॉपी कर सकते हो. इस पे हम वापस नहीं आ सकते. Two prime numbers P1, P2, P1 is less than P2 are called twin primes. Are called twin primes if they differ by 2. Example 11, 13, 41, 43, etc. If P1 and P2 are twin primes, P2 is more than 23, then which of the following numbers would always divide P1 and P2? So we are reaching the zone of manually checked questions. Manually आप create करके primes check कर लो. Does it say that these twin primes must be below 100 or 200? एक option double हो गया है, create करते time same number आ गया, ठीक है. You give it a shot. याद करो what are twin primes? Twin primes वो नंबर होते हैं जो 6 के मल्टीपल के आजू और बाजू में होते हैं. और आपको क्योंकि 23 से बड़ा नंबर चाहिए, 23 के बाद कौन कौन से मल्टीपल्स आते हैं 6 के? 30. और कौन से? 36, 42. और कौन से? 48, 54, 60. ऐसा 7-8 लिख लो. यू लुकिंग फॉर अ पैटर्न. 66, 72,
78, 84, 90, 96, 102, 108, एक बार लिख लो थोड़ा सा। अब इसके नीचे प्राइम नंबर 21, 31, इनको बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। तो इनको ऐड करके बन गया 60। भाई देखो, क्योंकि ये इससे एक कम और इससे एक ज्यादा, मतलब जब इनको ऐड करोगे 60 बनेगा। अगर 60 बन गया तो 8 से डिवाइड तो होता नहीं है, 24 से डिवाइड होता नहीं है, 12 आ गया हमारा आंसर। अगर इसके नीचे देखें 35 इज नॉट अ प्राइम, तो ट्विन देगा ही नहीं। इसके ऊपर नीचे का थोड़ा थोड़ा ध्यान दें, अगर 41, 43, इनको अगर मैं ऐड करूंगा आई विल हैव 84। 84 12 से डिवाइड होता है। 47 इज प्राइम, 49 इज नॉट। तो ट्विन तो वैसे नहीं बनना, ट्विन वैसे नहीं बनना, ट्विन वैसे नहीं बनना, ट्विन वैसे नहीं बनना, यहां बनेगा ट्विन प्राइम 71 एंड 73। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 144 बनेगा। 144 इज अ मल्टीपल ऑफ 12। हर जगह क्या आ रहा है? 12। ये जॉब इज डन। क्योंकि आप समझो, एक नंबर 6x माइनस 1 है और दूसरा 6x प्लस 1 ही है, कंफर्म है ये। इनको ऐड करते ही बेटा 12x बनेगा ना। ट्विन तभी होगा जब 6 के मल्टीपल के लेफ्ट और राइट में रखा हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ ट्विन प्राइम। 6 के लेफ्ट और राइट में अगर रखा है दैट इज अ ट्विन प्राइम। तो एक 6x माइनस 1, एक 6x प्लस 1 है। जब दोनों को ऐड करोगे हमेशा 12x बनेगा। इट्स अ मल्टीपल ऑफ 12। वही मैंने कहा ना, एक मैनुअल आप 4-5 नंबर बना लो और पैटर्न चेक कर लो। क्या एडिशन था ट्विन प्राइम्स का? एडिशन वाज 60, सम वाज 84। यहां पर भी ये सम आ गया हमारा ट्विन प्राइम्स का 72। दे आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 12। Any doubt in this? Try this.
all 2-digit natural numbers that have their units digit greater than tens digit are selected. All these numbers are written one after other in a series. How many digits are there in the resulting number? ये तो सीक्वेंस सीरीज में आना चाहिए क्वेश्चन, बेसिक्स ऑफ नंबर्स में आना चाहिए कि पास्ट कैट हमने यहां डाल दिया. व्हाट इज बीइंग सेड? 2-digit नेचुरल नंबर्स सारे के सारे 10, 11, 12 से 99. इनमें से कौन से नंबर सेलेक्ट करने हैं वेयर टेंस डिजिट यूनिट डिजिट इज ग्रेटर देन टेंस डिजिट? तो देखो, टेंस डिजिट, यूनिट डिजिट, मुझे यहां पर चाहिए यूनिट का बड़ा वैल्यू होना चाहिए 10 से. तो इसका मिनिमम वैल्यू अगर 1 है, 1, तो यूनिट डिजिट कैन बी 2, नंबर कैन बी 12, नंबर कैन बी 13, 14, तो इट कैन गो अप टू 9. अगर टेंस डिजिट 2 है तो यूनिट डिजिट कैन बी 3, 4, 5, 6 अप टू 9. अगर ये 3 है तो यूनिट डिजिट कैन बी 4, 5, 6 अप टू 9. वैसे ही जब ये 9 है तो 9 से ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है. अगर ये 8 है तो देयर इज ओनली वन पॉसिबल वैल्यू 89. तो नंबर्स कितने हुए? देखो, यहां से लेके यहां तक देयर आर 8 नंबर्स, यहां से लेके यहां तक देयर आर 7 नंबर्स. हाउ मेनी numbers are there? There are 8 numbers here, there are 7 numbers here. तो यहाँ पे कितने होंगे? 6 numbers होंगे. तो basically 8 plus 7 plus 6 ऐसा कहां तक जाएगा? इस नंबर तक. ऐसा एक ही नंबर है 1 तक. What is this? That is 8 into 9 upon 2, that is 36. ऐसे 36 numbers हैं. इस तरह के 36 नंबर हैं वेयर यूनिट डिजिट इज मोर देन 10. ऐसे 36 नंबर्स हैं. अब इन 36 को आप साइड बाय साइड लिखोगे. आप ऐसे लिखोगे 12, 13, 14, 15, 19, 23, 24. अब आपका क्वेश्चन है इसमें डिजिट कितने हैं? अब अगर इसमें 36 नंबर्स हैं, हर एक नंबर में 2 डिजिट हैं, तो डिजिट्स आर 36 into 2, 72. Digits are 36 into 2, 72. What do we want? We want tens value to be less than units value.
मूविंग ऑन। बड़ा आसान सवाल है बच्चों वाला। टेक 1 मिनट, टेक 1 मिनट एंड आंसर। आपको रिमाइंडर चाहिए when this is divided by 625। अब 625 क्या है? 5 का पावर 4। इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या है? आखिरी के 4 डिजिट चेक करो। जब डिविजिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द लास्ट 4 प्लेसेस, तो रिमाइंडर विल आल्सो डिपेंड अपॉन लास्ट 4 प्लेसेस। अब मैं ना आपको रिमाइंडर निकालना सिखाता हूं थ्रू कैलकुलेटर, नहीं तो इसको डिवाइड कर करके कौन सॉल्व करेगा मेरे को बताओ। आप अपना कैलकुलेटर निकालो और इसको डिवाइड कर दो, जो भी आपका abcd.e आता है मेरे को पूरे डेसिमल के साथ बताओ। If you use a calculator, you simply divide 8888 divided by 625, तो नंबर ऐसा आता है, it turns out to be 14.2208। तो ये जो 0.2208 है ना, into 625 is the remainder। तो आपका रिमाइंडर है 138। This is the fastest way to find the remainder with a normal calculator। साइंटिफिक में तो फॉर्मूला होता है रिमाइंडर का भी, उसको मॉड बोलते हैं, मॉड्यूलो, मॉड्यूलो, बट आपके में नहीं होता। Moving on, which of the following will completely divide this given number? इनमें से कौन सी वैल्यू इसे completely डिवाइड कर देगी? So go on, give it a try। Which of these will completely divide the given number? क्या क्या रूल सीखे आपने? What all patterns have you seen? आपको ये याद है? This you have learned whenever it is x की पावर even minus y की पावर even, it is divisible by x plus y, and it is divisible by x minus y, and it is divisible by x square minus y square। ये आपने एल्जेब्रा में भी किया है, पॉलिनोमियल्स में, और ये आप यहाँ भी कर रहे हो। So here it will be divisible by, ध्यान से, 106 plus 49, it will be divisible by 106 minus 49, और दोनों को मल्टीप्लाई करके भी डिवाइड होगा। तो what is this? This is 155 into, अब देखो मैं इसमें से अगर 46 माइनस कर दूं तो 60 में से भी 3 माइनस कर दिया
अब आपको यहां पर तो ये नंबर दिख ही नहीं रहे, दीज नंबर्स आर नॉट विजिबल हियर। अब देखो 124 इज अ इवन नंबर। अब ये खुद देखो, ये आप थोड़ा ध्यान दो, ये इवन है और ये ऑड है। इवन माइनस ऑड क्या आएगा? ऑड। क्या कोई ऑड वैल्यू, जैसे आपके पास 15 है, क्या ऑड वैल्यू 4 से डिवाइड होगी? क्या ऑड वैल्यू 6 से डिवाइड होगी? नहीं, ये नंबर है इवन। 106 कोई पावर हो, 49 कोई पावर हो, इवन माइनस ऑड इज ऑड। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गए आपके। अब आपको ध्यान देना है कि ये पॉसिबल है क्या? क्या ये बन सकता है? इज इट पॉसिबल? है क्या? तो ये थोड़ा ब्रेक डाउन करके देखते हैं। व्हाट इज दिस? दिस लुक्स लाइक 5 इंटू 53, 5 इंटू 31, 5 इंटू 31। और ये क्या है? दिस इज 5 इंटू 19, क्योंकि इसके आखिरी में 9 है। 3 इंटू 19, 3 इंटू 19, दिस इज 5 इंटू 31, 3 इंटू 19। क्योंकि इसके आखिरी में 9 है, तो बस इन दोनों को चेक कर लो आप। 31 इंटू 19। अब देखो 31 इंटू 20 कितना होता? 31 इंटू 20 वुड बी 620। 31 कम कर दो। ऑप्शन बी और सी कैसे रिजेक्ट किया हमने? हाउ डिड वी रिजेक्ट ऑप्शन बी एंड सी? बिकॉज द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज ऑड। हाउ कैन अ ऑड वैल्यू बी डिविजिबल बाय अ इवन वैल्यू? उल्टा, अगर डिफरेंस 24 होता, बेटा 24 तो 3 से डिवाइड होता है ना। सुनना, ऑड डिवाइडेड बाय इवन नहीं होता है, इवन डिवाइड बाय ऑड ये बेटा हो सकता है, मे बी। देखो यहाँ पे सीखो ना ये सब चीजें, दीज आर ऑब्जर्वेशंस, नो बुक कवर्स दीज एज थ्योरी और फॉर्मूला। देख देख के, प्रैक्टिस कर करके वी कैन लर्न दीज थिंग्स। मूविंग ऑन, simple enough application. How many even integers, how many even integers n, where n is between this and this? ध्यान देना, इसको इंक्लूड नहीं किया, इसमें इसको इंक्लूड नहीं किया, this has not been included. They are divisible neither by 7 nor by 9. 7 और 9 से डिवाइड नहीं होने चाहिए. So these kind of questions are usually solved through basic understanding of set theory or union of sets. आप देखो कितने इवन नंबर है. पहला इवन नंबर क्या है? 102, which is 2 into 51. 104, 2 into 52. आखिरी इवन नंबर क्या है? 2 into 100. तो 51 से लेके 100 तक how many numbers are there? There are 50 numbers.
50 इवन नंबर है इस रेंज में, 100 गैप में होते 50 नंबर है इवन, अल्टरनेट इवन ऑड, कॉमन सेंस 50 इवन नंबर। इन 50 इवन नंबर्स, 50 इवन नंबर्स में से we need to remove the multiples of 9 and 7. थोड़ा मैन्युअली करो, बेटर रहेगा। अब मल्टीपल ऑफ 7 कैसा आएगा इवन, देखो आप थोड़ा टेबल लेवल समझो। आपको मल्टीपल ऑफ 9 अगर देखो, 98 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, उसके बाद +7, 105 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, बट ये तो ऑड है। उसके बाद 112 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। तो जो पहला मल्टीपल ऑफ 7 है इस रेंज में, मल्टीपल ऑफ 7 वो क्या है, 7 इंटू, ये कौन सा है, 7 इंटू 16, ये पहला मल्टीपल है। अब अगर आप 200 को डिवाइड करोगे 7 से तो रफली पता पड़ जाए कितने नंबर आएंगे। ये हो जाएगा 2 टाइम्स 14, ये आ गया 60, तो 8 टाइम्स। तो 7 इंटू 28 आपका आखिरी मल्टीपल होगा, 7 इंटू 28। तो यहां से लेके यहां तक कितने मल्टीपल्स हैं, देयर आर 13 नंबर्स। यहां पर 13 नंबर्स हैं, 13 नंबर्स। अब मेरे को 9 के मल्टीपल चाहिए, तो 9 का पहला मल्टीपल क्या है, 108। 108 क्या होता है, 9 इंटू 12। 9 का आखिरी मल्टीपल क्या होगा, देखो 9 इंटू 21 इज 189, 9 इंटू 21 इज 189। तो ये तो ऑड हो गया ना, तो 9 इंटू 20 ये आखिरी मल्टीपल होगा। तो ऐसे कितने मल्टीपल्स हो गए, 9 मल्टीपल्स हो गए 9 के। 7 के 13 मल्टीपल्स, 9 के 9 मल्टीपल्स हो गए। बट इसमें से भी इवन चाहिए ना आपको इवन चाहिए, वो भी आधे होंगे। ये भी क्यों कर रहे हो ऐसा, लेट मी राइट दिस डाउन, थोड़ा क्लैरिफाई करता हूं मैं। आपको सारे 13 थोड़ी चाहिए, सारे 9 थोड़ी चाहिए, आपको इवन चाहिए ना। तो कौन कौन से इवन होंगे, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 1 2 3 4 5 6 7। वैसे ही 12, 14, 16, 18 एंड 20, 1 2 3 4 5। तो 50 में से आपने इन 7 को माइनस किया, इन 5 को माइनस किया, लेकिन जो दोनों के कॉमन मल्टीपल है, ये जो नंबर है ये 7 का भी मल्टीपल है ना, ये नंबर 2 बार आ गया आपके पास, 7 इंटू 18 एंड 9 इंटू 14, ये नंबर 2 बार आ गया। तो ये एक बार ऐड कर दो, 50 माइनस 12, 50 माइनस 12, 38 प्लस 1, 39। There's your answer. अब ना आंसर ऑप्शन कॉन्जिक्यूटिव है, 37, 38, 39, 40। आंसर ऑप्शन अगर दूर दूर होते तो मैं एक नया कॉन्सेप्ट लगाता, ऑयलर्स नंबर। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑयलर्स नंबर। उसमें डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी तो फंस जाओगे। तो मैन्युअली मैंने 7 का मल्टीपल देख लिया। 7 इंटू इवन क्यों चाहिए, क्योंकि सारे नंबर इवन है। 9 इंटू इवन क्यों चाहिए, क्योंकि इवन मल्टीपल्स है। बाद माइनस कर दिया उनको। +1 क्यों किया, ये सेट थ्योरी वाला पार्ट है। Na प्लस nb माइनस na इंटरसेक्शन b, जो दोनों में ओवरलैप होता है वो 2 बार काउंट हो गया। 7 के मल्टीपल और 9 के मल्टीपल में ये नंबर दोनों साइड काउंट हो गया, उस नंबर को आपको आखिरी में प्लस करना पड़ेगा। कंफर्म करो एक बार, ये क्लिक हुआ नहीं हुआ। शुड आई रिपीट एनी ऑफ दिस? ये मेरे को टेबल्स आते थे तो मैंने टेबल्स यूज कर करके बनाया। आप उल्टा क्या करो, सीधा 100 को डिवाइड कर दो 7 से, 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 14th मल्टीपल 100 के नीचे है, तो कौन सा मल्टीपल होगा, 16th मल्टीपल आगे होगा। आप सीधा 200 को डिवाइड कर दो 7 से, तो आपको पता पड़ जाएगा ना कौन सा मल्टीपल वहां तक जा रहा है। हमें इवन मल्टीपल चाहिए तो एक आइडिया लग जाएगा अपने को। तो विथ हेल्प ऑफ कैलकुलेटर अगर आप थोड़ा लॉजिक से इस्तेमाल करो, बनाओ, बिकम्स अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चन। बस सेट थ्योरी का अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको। द कॉमन पार्ट
must be added at the end. मैं भी आपको एक बार दिखाता हूं। हाँ, right now we are at 31st slide, 31st slide। बेटा अभी भी आपके पास 24 स्लाइड्स और है हमारे पास, 24 स्लाइड्स और हैं। बस एक कॉन्सेप्ट और बचा है डिवाइजर्स में, हाउ टू राइट अ नंबर एज डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। नंबर इवन है, ऑड है, स्क्वायर है, हाउ टू राइट अ नंबर एज डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। अच्छा, मैंने आपको एक और टास्क दिया था कल। मैंने आपसे कहा था इफ यू कम अक्रॉस ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू xy, इसको आपको कन्वर्ट करके ऐसा कुछ मिलेगा। आपको ये बताना था राइट साइड में a इंटू बी प्लस सी होगा या a इंटू बी माइनस सी होगा या कुछ और ही होगा, c माइनस a इंटू बी होगा। इनमें से कौन सा केस बनेगा सो दैट यू कुड सॉल्व इट इफेक्टिवली। ड्राइव किया आप लोगों ने? कैट वालों को पता है, चिंटू मिंटू रॉनी ये सब क्या करवा रहे हैं क्लासेस में, तो वो एक स्टेप आगे चले जाते हैं। तो चिंटू मिंटू रॉनी पैनिक करते हैं, आप भी पैनिक कर जाते हो। मैंने आपसे कहा भी था एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे, ये कांस्टेंट यहां ना रख के ये कांस्टेंट यहां रख देंगे, तो क्या बड़ी बात है, आपने पूरा डेरिवेशन देखा है। तो अभी भी टाइम निकाल के इनमें से देख लो विच केस विल वर्क, एंड आई कैन शो यू कैट में कौन से ईयर में ये सवाल आया है। प्लस सी प्लस कांस्टेंट। So we will complete the remaining questions of divisors and factors. There are about 24-25 questions left in the next class, and then we'll pick up with LCM, HCF, and co-primes in the next session.